Can anyone confirm if you are able to see the screen? Yes, sir. Thank you. Thank you very much. Okay, so we will get started. Don't have too many people. Maybe other people will join later on. So we'll start with the where we are. Take a stock of things. You're on chapter 6, which is about the joint distributions. Joint distributions. Okay, and we talked about the multiple random variables simultaneously, discrete as well as continuous, and we talked about their joint distributions. So joint PMF of x and y is probability that your random variable x takes a value small x and the random variable y takes the value small y. That's the joint PMF. Joint PMF. Joint PMF. Similarly, we have a definition for the joint PDF as well as for the joint serial. Okay. Then we talked about conditional distributions, and those were probability x takes a value x given y takes a value y, x given y, which is equal to, for the discrete case, of course, is the probability that x takes the value x given that y takes the value y. And we said that these two, x taking a value x and y taking a value y, these are two events. So this is probability of one event given the other event. And from chapter 2, we can write this as probability x taking a value x and y taking a value y divided by probability y taking a value y. Okay. And then for the continuous case, we had the conditional distribution of x given y as, by the same token, the joint distribution of x and y divided by the marginal distribution of y. Okay. And how did we find the marginals? For finding the marginals could be found by summing out. Marginal PDFs are found by summing out or integrating out, depending upon if we are talking about the discrete random variable or the continuous random variable, integrating out the other guys. So for example, f of y given y, which is the marginal of y, would be equal to, by integrating out x out of this guy. Okay. Similarly, py of y would be equal to summing out x out of this guy. Okay. And we also talked about independence of random variables, and we said that two random variables x and y are independent. If and only if fxy, their joint distribution is equal to the product of the marginal distributions. And this is for the continuous case. Similarly, for the discrete case, I'm not going to mention that here. What is also important to remember for the independence is the conditional distribution of x given y, this by definition, the conditional distribution, जो हमने यहाँ पर लिखी, this conditional distribution here is equal to this. So since x and y, they factor out,
So this will turn out to be equal to f of x, क्योंकि ये फैक्टर आउट हो जाएगा x और y में, और नीचे y वाला क्रॉस हो जाएगा. You will only be left with x, which makes sense. कि if x and y are independent, then the conditional distribution of x given y should be the same as the distribution of x. y का कोई x की सेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. y could be anything, so the whether y is given or not given, it does not matter. So this is independence. Okay, and same thing for the discrete case as well. Then yesterday or last lecture, we talked about the sums of independent random variables. Okay. So discrete के case भी हमने किया था, which was easy to handle, probability of x plus y taking some value. We also looked at continuous के case में हमने देखा कि f of x plus y at a is convolution of fxx and fyy, and we did one problem of two uniforms convolving with each other. So two uniforms convolving with each other. This guy convolved with this guy. ये हमने last time example की. इसकी हाइट भी 1 थी, इसकी भी हाइट 1 थी, इसकी हाइट भी 1 थी. तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि ऐसे करते हैं कि किसी एक को पिक कर लें, किसी भी एक को पिक कर लें. Let's say we pick this one, we flip it around, तो ये flip करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा. So -1 0, और उसके बाद इसको इस वाले को लेके ट्रेवल करवाना शुरू कर दें -∞ से with this guy. ये ब्लैक वाले के ऊपर मैं इसको शुरू कर देते हैं इसको. So the black guy is here, 0 1, height is 1, and then I take this red guy और इसको -∞ से ट्रेवल करवाएंगे, और when I travel it from -∞, तो ये -1 और 0 नहीं रहेंगे, ये कुछ वैल्यू होगी z and z -1, and I will take these guys and let me do that. Yeah, so I will take this guy और इसको यहाँ से ट्रेवल करवाएंगे slowly, yeah, and then until z is this guy, z is equal to 0, तो कोई ओवरलैप नहीं हो रहा दोनों के बीच में. जब z 0 के बराबर पहुंच जाता है, ठीक है, जब z 0 के बराबर पहुंच जाता है तो ये ओवरलैप होना शुरू हो गया. सो द प्रोडक्ट ऑफ द रेड गाय एंड द ब्लैक गाय, इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, और ये पूरा का पूरा ओवरलैप हो गया, फुल ओवरलैप हो गया. तो दोनों की प्रोडक्ट जो है वो 1 होगी, integrated over this area, it will give you an answer of 1. And then this guy keeps on moving, and then the overlap decreases until it becomes 0. So ये जब हमने इसको यहाँ से ट्रेवल करवाया, यहाँ पे, so हुआ ये कि जैसे जैसे z चेंज होता गया, z when it is less than 0, our answer is 0. As z goes between 0 and 1, this guy, and between 1 and 2, this guy. So ये 1 की हाइट तक पहुंच जाएगा. 2, and we did this procedure last time. Graphically भी हमने करके देखा था. So this is the PDF of x plus y evaluated at the fxy as a function of z. You can verify that this is the PDF. You can verify this. कैसे? इसका area under the curve निकालें. So area under the curve would be triangle है, तो half into base into height, which is equal to 1. So, and it is non-negative always, so it is a PDF. Verify. Okay. Now today I'm going to talk about a few more examples. Okay, I'm going to talk about some of independent gamma random variables. Okay, ये चैप्टर 5 में हमने किए थे. इनफैक्ट हमने स्किप कर दिए थे, बट चैप्टर 5 में ये इसकी डेफिनेशन अवेलेबल. We did exponential random variable in chapter 5.
Everyone recalls exponential random variable, that exponential random variable with parameter lambda has a distribution given by lambda e to the minus lambda x for x greater than 0. इसकी shape इस तरह की होती है. Okay. And we said that this guy is this has a memoryless distribution. You know, if the time for failure of a machine is exponentially distributed, so if I ask you, okay, what is the probability it will live for 2 years? The answer would be the same if I tell you, okay, if it has already lived for 1 year, what is the probability that it will live for an additional 2 years? So exponential distribution में हमने memoryless property भी पढ़ी थी. Okay. We said that exponential distribution is generally the waiting time until something happens. The waiting time until something happens. बहुत सारी चीजें ऐसे मॉडल हो सकती हैं. Waiting time until something happens. And what is that something? That is an event of interest. This could be arrival of a data packet at a computer network. This could be arrival of a customer at a bank. This could be the next earthquake. This could be the lifetime of a light bulb. Many different examples can be modeled as the waiting time, can be modeled as an exponential distribution. It is the waiting time until an event of interest happens. An event of interest happens. By the same token, we have this distribution which is called gamma distribution. Exponential distribution एक पैरामीटर से थी. Gamma distribution 2 parameters here. So if you have a random variable x which has a gamma distribution, and the gamma distribution with t comma lambda, okay, then this guy is also the waiting time until t events happen. Waiting time until T packets arrive, or T customers arrive. So पहले इवेंट के में जो हमारा इंटरेस्ट जो एक्सपोनेंशियल से मॉडल होता है कि what is the time until the earthquake comes. Now I say कि what is the time, the distribution of the time until 15 earthquakes happen in a city where earthquakes generally happen. So gamma distribution is a more generalized form of exponential distribution. In fact, it is even more generalized. Why? Because ये t जो है, it is not necessarily an integer. T जो है वो कुछ भी हो सकता है. Okay. So gamma distribution has a probability density function given by. Now you might notice कि ये अगर t जो है is the waiting time until t packets arrive और ये exponential है, तो gamma की जो distribution है वो t is equal to 1 के लिए should be equal to the exponential distribution, should be the same as the exponential distribution. Okay, and that is actually the case. So the distribution of gamma is lambda e to the minus lambda x, वही exponential, multiplied by lambda x power t minus 1 divided by this constant called gamma t, and this is also x greater than 0 less than infinity. Now you notice that there are two extra terms here. ये exponential से दो ज़्यादा चीजें आ गई हैं, but for t is equal to 1, both of them turn out to be equal to 1. So t is equal to 1 के लिए, for t is equal to 1, f x of x would be equal to lambda e to the minus lambda x, which is the same as exponential distribution with lambda, parameter lambda. Okay, ये भी हमने prove नहीं किया. Okay, but let's take a look at this guy. What is this gamma t? What is this constant? In order to find this constant, I will use the fact कि ये जो distribution है, distribution को अगर आप integrate करें over the entire region, you should get 1. Okay, so integral of fx should be equal to 1, which means that gamma t should be equal to the integral 0 to infinity lambda e to the minus lambda x into lambda x power t minus 1 dx. ये होना चाहिए. अगर gamma t ये डिनोमिनेटर अगर इसके इंटेग्रल के बराबर है,
इसके इंटीग्रल के बराबर है, विच मीन्स कि मैं अगर fx को इंटीग्रेट करूंगा तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वो कैंसिल हो जाएंगे एंड we will get a 1 as the integral of the PDF. Okay. You can also plot this guy and find out that this is non-negative. So this will actually be a PDF. This will actually be a PDF. Okay. Now I can simplify this expression for gamma t. इसको simplify कर सकते हैं by putting lambda is equal to 1. By putting lambda is equal to 1. So it does not matter. It does not matter कि मैं lambda की क्या value लूंगा. ठीक है. So this would be equal to 0 to infinity because this is a definite integral. This is a definite integral for every value of lambda. This guy should be the same. Okay. Lambda इसमें से वैसे ही integrate out हो जाएगा. So this would be equal to e to the minus y power t minus 1 dy. Okay, and this can be seen by simply setting lambda x is equal to y. Simply setting lambda x is equal to y in this above expression, and you will get this expression. ये कोई ऐसी important चीज नहीं है, but this is the definition of lambda. This is definition of gamma. इसको internally, this guy can be integrated by parts. इसको by parts अगर integrate करें, आपके पास आता है gamma t would be equal to t minus 1 into gamma t minus 1. एक दफा एक स्टेप लेके इसको by integration by parts करके देखें तो you will come up with this answer. This is integration by parts. Integration by parts. So you will end up this. ठीक है. So इससे हमें इस equation से हमें क्या पता चलता है कि although we know that t is not an integer necessarily, it can be. If t is an integer, then gamma t is really equal to t minus 1 factorial. क्यों? क्योंकि ये factorial वाली definition है t minus 1 के साथ, so ये t minus 1 factorial के बराबर होता है. Okay? Only for integer t. Okay? Now for t is equal to 1, gamma t comma lambda is equal to gamma 1 comma lambda is really the same as exponential distribution with parameter lambda. Okay. Now let's talk about the sum of two independent gamma random variables. Okay. So if you have two random variables, x, which is gamma with parameters s and lambda, and y, which is also gamma with parameters t and lambda, and x and y are independent. ये जो हमारा टॉपिक चल रहा था, सम ऑफ इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन बताएं. ठीक है. So interested in x plus y. So x plus y की डिस्ट्रीब्यूशन में हम इंटरेस्टेड हैं. ठीक है. It turns out can find the PDF of x plus y using convolution. ठीक है. कोई मुश्किल नहीं है, एक दो स्टेप्स हैं, ये हमने नोट्स में किए हुए हैं, but they are sort of, I will skip those steps and I will write the results here. X plus y is gamma s plus t lambda, and I will describe an intuitive sense of this. Think about the following. Okay. Although this expression is true for every s and every t, means that s and t not necessarily have to be integers,
बट इफ दे आर इंटीजर्स, तो इंटीजर्स के केस में मैं आपको इंट्यूटिव सेंस इसकी बताता हूँ। इसकी इंट्यूटिव सेंस ये है कि जो x है is the waiting time for s events to happen, and y is the waiting time for t events to happen. So x plus y must be, if x and y are independent, then x plus y should be equal to the waiting time until s plus t events to happen. Until s plus t events to happen. Okay, s plus t events to happen. By the way, this intuitive explanation is only working for s plus t. S and t are integers. If they are not integers, the relationship is still true, लेकिन वो intuition हमारी ऐसे नहीं बनेगी. We can't talk about 3.4 packets coming in or 2.9 customers coming in into a bank. Okay? Sir, Yes. would this mean that the probability of the waiting time would be higher if the number of events are higher? It does not mean that the probability of waiting time is higher if the number of events is higher. It just means that this this distribution has these parameters s plus t and lambda. Probability distribution uski kya hogi? This is true that the waiting time for 4 events, the you know, वो भी 0 से infinity तक होगा. Waiting time for 20 events वो भी 0 से infinity तक होगा. ठीक है. So probability, when we talk about probability distribution, we say that the random variable can take any value along the set. ये gamma distribution जो है ये 0 से infinity तक है. So even for one event, exponential distribution जिसमें सिर्फ एक ही event का इंतजार होता है, वो event भी जो है वो 0 से infinity तक उसका time occur करने का कोई भी value ले सकता है. Now we are talking about multiple events happening. So yes, we can say कि average value जो है वो ज्यादा होगी. I cannot say कि उसकी probability ज्यादा होगी या नहीं होगी. Okay? Okay, thank you. So average value definitely will be more. So generalize करते हैं इसको. Generalize करते हैं. If xi is gamma ti and lambda, where I is equal to 1, 2, 3 up to n, I is equal to 1, 2, 3 up to n, and all xi's are independent. All of these are independent. So पहले दो को अगर ऐड करें तो वो t1 plus t2 आ जाएगा. फिर एक तीसरा भी ऐड कर दें तो वो t1 plus t2 plus t3 आ जाएगा. So that means कि the distribution of the summation I is equal to 1 to n xi would be the same as a gamma distribution in which the waiting times are I is equal to 1 to n ti comma lambda. What is important is कि lambda is exactly the same for these guys. Remember कि exponential distribution जो थी इसके अंदर lambda में क्या बताता था? lambda में ये बताता था कि how quickly do you fall here. ये इसका rate जो है, rate of decay हमें बताता था. If I change lambda, it changes the expected value. It changes the probabilities. Okay. Then that means कि ये हमें जो gamma random variable, ये नहीं हम कह सकते कि 3 events के लिए तो आप किसी और rate पे इंतजार करें और 5 इवेंट्स के लिए किसी और रेट पे इंतजार करें. नहीं, सबके लिए जो इंतजार हो रहा है वो सेम रेट के ऊपर इंतजार हो रहा है. सो लैम्डा हैज टू बी द सेम, एग्जैक्टली द सेम. इफ इट इज नॉट द सेम, द सम ऑफ x1 एंड x2 will not be equal to gamma, will not be equal to gamma. कुछ और डिस्ट्रीब्यूशन होगी, we can find that out, but it would not be gamma. Okay, now we also said कि gamma 1 comma lambda is the same as exponential lambda. Okay, so then if x1 x2 dot 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 up to xn are independent exponential random variables, each with parameter lambda, okay, then the summation of I is equal to 1 to n xi. यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं? हम ये बात कर रहे हैं कि ये जो आपके पास random variables हैं, x1 is exponential, x2 is also exponential, xn is also exponential. All of these are exponential, which means they are gamma 1 lambda. So all of these are exponential. x1 is the waiting time for one packet, x2 is the waiting time for one packet, xn is also the waiting time for one packet.
ऑल ऑफ दीज आर इंडिपेंडेंट, क्योंकि एक्सपोनेंशियल में आप एक ही पैकेट का इंतजार कर रहे होते हैं, एक ही बंदे का इंतजार कर रहे होते हैं, एक ही इवेंट की अकर करने का इंतजार कर रहे होते हैं, नॉट फॉर मल्टीपल इवेंट. नाउ when I'm saying that these are independent and I want the sum here is sum की distribution, that means कि I am looking at the waiting time, waiting for n events to happen, all happening with a rate of lambda, so इसकी जो distribution होगी, इसकी distribution would be a gamma distribution with 1 plus 1 plus 1 plus 1 कितनी दफा n times, so this would be n lambda. Okay, so exponential lambda is the waiting time until an event happens, until an event of interest happens. Gamma n lambda would be the waiting time until the same event happens n times. वही जो डाइस रोल अगर कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो 6 जो है वो जब तक 6 नहीं आएगा, well in this case it is the number of sums which is geometric, लेकिन let's say कि हम हर सेकंड के ऊपर जो है वो एक डाइस रोल कर रहे होते हैं, so the number of seconds until you see a 6, that can be approximated by an exponential. Geometric भी हमने कहा था कि एक exponential से approximate आप कर सकते हैं, या vice versa. So exponential is the continuous equivalent of a geometric distribution, so किसी भी इवेंट के अकर करने के लिए आपके पास जो टाइम है needed is exponential lambda. If I want the same event to occur multiple times, then the sum of this distribution would be gamma n lambda. Oops. सिरी कहीं से ऑन हो गया, gone. All right. Now, next is I'm going to talk about sum of independent normals. Okay. We already talked about normal distribution. We are now going to talk about the sum of independent normals. So if you have xi, which is normal with mean mu I and variance sigma I square, for I is equal to 1, 2, all the way up to n. Okay. Then summation of I is equal to 1 to n xi. ये बहुत सारे नॉर्मल्स को आपने ऐड किया है, तो क्या होगा? Now I'm showing this without proof, बुक में इसका प्रूफ भी अवेलेबल है. This would be normal. So means के साथ क्या होगा? Now let's say कि you have one normal with mean 3 and another normal with mean 5. It is obvious कि हम अगर इन दोनों को ऐड कर दें, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये, and they are independent. So एवरेज वैल्यू जो एक ले रहा है वो 3 ले रहा है, दूसरा 5 ले रहा है, तो उनका सम जो है उसकी एवरेज वैल्यू जो है वो 8 होगी. एंड दिस इज ऑलवेज ट्रू फॉर नॉट जस्ट फॉर नॉर्मल, फॉर एवरी रैंडम वेरिएबल, के उनकी जो है एक्सपेक्टेशंस का सम is equal to the sum of their expectations. Okay, so this is equal to I is equal to 1 to n mu I. What about the variances? If they are independent, and it is very important, if they are not independent, then this will not work. If they are independent, then their variances will also get added. Sigma I square. Their variances will also get added. Okay. Now, I will give you an example. Okay. X1 is normal 2 and 4, and x2 is normal 3 and 9. Okay. Then x1 plus x2
would be equal to normal 5 and 13. 5 and 13. Okay. X1, X2 are independent. Very important. Very important that they are independent. Okay. What if they are not independent? Then we cannot say anything about it. We cannot say. So एक उसकी भी example ले लेते हैं कि what is, let's say, let me find out x1 plus x1, x1 plus x1. What is the distribution for x plus 1, x1? What is the distribution? So this is really 2x1. This is 2x1. Okay. Now we know that expected value of 2x1 would be equal to 2 times expected value of x1. So which is fine. So x1 plus x1 हमारे पास क्या निकलता हुआ आ रहा है? This is turning out to be normal with 2 plus times 2 is 4, which is fine. Okay. Now is the variance 4 plus 4? Is the variance 4 plus 4? In this case, the answer is yes. The answer is yes. So 4 plus 4. Why? Because the variance of x1 would be equal to this guy 2 ka square into variance of x1, which is equal to 4 into 2, which is 8. Okay. Now this is a very misleading result. Why? I will show you. What is the distribution of Sir, GG? sir, variance of x1 तो 4 है, so 4 times 4 16 हो जाता. 4 times 4 16 हो जाएगा. हाँ जी. Variance of x1. Okay. So ये फिर दूसरी एग्जांपल की जरूरत ही नहीं है. ये तो यहीं से पता चल गया. ये तो यहीं से पता चल गया. 4 times 4, which is 16. Sorry about this confusion. Okay. So normally अगर आप देखें कि ये x1 plus x2 थे, अगर ये इंडिपेंडेंट हैं तो इनके सम में मीन्स भी ऐड हो जाती हैं और वेरिएंसेस भी ऐड हो जाती हैं. लेकिन अगर ये x1 plus x1 है एंड clearly x1 is not independent of x1, clearly it is not independent of x1, then the means are added. The means are added, which means कि एक x1 है आपके पास normal 2 4, एक और x1 है which is also normal 2 4, but the variance do not get added. Variances जो हैं वो यहाँ पर आप देखें इनके साथ कुछ और ही कुछ हो रहा है. So that means कि it is very important that x1 and x2 are independent for this relationship to hold. For this relationship to hold, so independence का होना बहुत जरूरी है. Okay. So what if x1 and x2 are not independent? If they are not independent, then they will have some dependency. They will have some dependency. They will be related to each other. इसको हम मेजर भी करेंगे चैप्टर 7 में जाके कि किसने रिलेटेड हैं, ये बहुत ज्यादा रिलेटेड हैं एक दूसरे से या नहीं. एंड द मेजर ऑफ दैट रिलेशनशिप वुड बी कॉल्ड कोरिलेशन. वुड बी कोरिलेशन. सो वी विल फाइंड आउट कि x1 plus x2 की मीन क्या होता है. वो इट विल ऑलवेज बी 5, and if there is some dependency between these two, the variance would of the x1 plus x2 would be can be computed. हमें अभी नहीं पता कैसे कंप्यूट करते हैं, चैप्टर 7 में जाके हमें पता चल जाएगा. Now I have one more distribution. It's called chi-square distribution. Chi-square distribution. And this is called a chi-square distribution with n degrees of freedom. इसके दो पैरामीटर्स हैं. इनफैक्ट एक ही पैरामीटर है n, but there is another hidden parameter. वो आपको बता देते हैं. If you have zi normal 0 1, standard normal, if you have a standard normal distribution zi and all zi's are independent for I is equal to 1 2 all the way up to n, ये बहुत सारे आपके पास independent standard normal distributions हैं. Then chi-square n is defined as the distribution of
I is equal to 1 to n zi square. So जो स्टैंडर्ड नॉर्मल है उसका आपने स्क्वायर लेना है और आपने सम करना है. सो फॉर एग्जांपल z1 squared will have a chi-square distribution with 1 degree of freedom. z1 square plus z2 square will also have a chi-square distribution with 2 degrees of freedom. z1 square plus z2 plus z3 square would have chi-square distribution with 3 degrees of freedom. Okay. Now, we can show that, and this shown in the notes में ये show भी किया हुआ है हमने. It's simple finding out the distribution of, considering n is equal to 1, chi1 square is the same as z1 square, is it the same as z1 square. chi-square distribution with 1 degree of freedom. 1 degree of freedom है तो एक ही आपने स्टैंडर्ड नॉर्मल लेना है और उसका स्क्वायर आपने रख देना है. Okay. So what is the distribution of this guy? Yeah, y is equal to this. Distribution of y. So looking at the distribution of y, we can calculate the distribution of y by using this relationship. Using y is equal to z1 square. Using y is equal to z1 square, we can find PDF of y. क्यों? क्योंकि हमें z1 का PDF पता है. ठीक है. अगर एक रैंडम वेरिएबल का PDF पता हो तो फंक्शन ऑफ दैट रैंडम वेरिएबल का PDF आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. Okay? So it turns out, if you do that, it turns out कि ये जो y है इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास आती है, this turns out to be gamma distribution with parameters 1 by 2 and 1 by 2. 1 by 2 and 1 by 2. That means chi-square distribution with 1 degree of freedom is the same as gamma distribution with parameters 1 by 2 and 1 by 2. जिसका lambda भी 1 by 2 है और जिसका ये t या n जो भी है ये भी 1 by 2 है. Okay? This implies that कि chi-square 1 क्या था? chi-square 1 था एक स्टैंडर्ड नॉर्मल का स्क्वायर. chi-square n is n standard normal के squares का sum. Okay? So that earlier result with gamma, कि gamma में हमने क्या कहा था, एक gamma आपके पास s lambda हो और एक gamma t lambda हो, तो दोनों का sum क्या होता है? s plus t lambda. So this would be equal to gamma of n by 2 1 by 2, n by 2 1 by 2. So there is this calculation of the PDF of y is 2-3 steps process. ये class notes में किया है. C notes. Book में भी है, but notes में हमने जरा आसान करते हैं इसको. So next topic that I am going to cover is about order statistics. Excuse me, Order sir. statistics. जी. सर ये आपने जो यूजिंग y is equals to z1 square वाली जो लाइन लिखी है इसके बाद ये दो स्टेप समझ नहीं आया मुझे. ये हमने रिजल्ट डायरेक्टली लिख दिया है और हमने कहा कि ये नोट्स में से देखें. ये इट टर्न्स आउट कि y की जो डिस्ट्रीब्यूशन है it will turn out to be gamma 1 by 2 1 by 2. ये it will turn out. You need to find the distribution of y. ये फाइंड आउट करनी पड़ेगी जो हमने नोट्स में की हुई है. प्लीज उसमें से देखिए. थैंक यू. ठीक है. So order statistics क्या है? So let's say कि you have random variables x1, x2, x3, so on up to xn are independent and identically distributed. इसका मतलब सबकी डिस्ट्रीब्यूशन एक ही है, लेकिन है ये इंडिपेंडेंट. अलग-अलग रैंडम वेरिएबल हैं लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन सबकी एक है. ये भी लेट्स से कि एक्सपोनेंशियल लैम्डा है, ये भी एक्सपोनेंशियल लैम्डा है, ये भी ऑल ऑफ दीज आर एक्सपोनेंशियल लैम्डा, या ऑल ऑफ देम आर यूनिफॉर्म बिटवीन a and b, all of them uniform between a and b, but they are independent of each other. Yeah, we define x1 as the smallest of these. x2 ये ब्रैकेट में नीचे is the second smallest of these.
सो इसी तरह से xn would be the largest of these, largest of these. ये जो रैंडम वेरिएबल्स हैं इसमें से एक सब, जब भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे हर रैंडम वेरिएबल की एक वैल्यू आएगी, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट जो वैल्यू आएगी उसको हम x ब्रैकेट में 1 कह देते हैं, एंड देन 2 एंड अप टू n, ठीक है। आई एम इंटरेस्टेड, जी जी सर एक क्वेश्चन पूछना था, जी सॉरी जी टू इंटरप्ट सर, क्योंकि देखिए फॉर एग्जांपल अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि एक्सपोनेंशियल जिस तरह होता है तो वो 0 से इन्फिनिटी कोई भी वैल्यू दे सकता है, बस उसकी डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज होती है कि क्या वैल्यू वो देता है, यानी कि जी प्रोबेबिलिटी जी, डेंसिटी डिफरेंट है लेकिन वैल्यू कोई भी दे सकता है। तो कोई भी वैल्यू दे हम सकते हैं। तो हम रैंडम वेरिएबल्स को किस तरह ऑर्डर करते हैं कि ये रैंडम वेरिएबल इस वाले से बड़ा है? हम्म, हाँ, हम ऐसे इसको ऑर्डर करते हैं कि हम एक्सपेरिमेंट रन करते हैं तो मुझे रैंडम वेरिएबल की एक वैल्यू मिलेगी। एक्सपेरिमेंट रन करना है, आपने ऐसा नहीं करना है कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन पता है, मुझे डिस्ट्रीब्यूशन भी पता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन जब पता होगी तो उसके बाद मैं रन भी करूंगा, ठीक है। आपको एग्जांपल देते हैं, आपको एक एग्जांपल देते हैं कि आपके पास x1 जो है वो एक एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल है with lambda, and x2 is also exponential lambda, and they are identically distributed, and let's say they are independent, so they are independent, identically distributed, IID, independent and identically distributed, ठीक है। so जब आपने एक्सपेरिमेंट रन किया ना तो आपके पास x1 की कोई वैल्यू आई और x2 की कोई वैल्यू आई, मुझे नहीं पता कि x1 छोटा आएगा या x2 छोटा आएगा, बट जो भी छोटा आएगा मैं उसको पकड़ लूंगा। Sometimes it will happen that x1 will be smaller than x2, sometimes it will happen that x2 will be smaller than x1. So min of x1 x2, please accept that this is a random variable, this is a random variable, whatever that random variable is, this will have certain distribution. ये एक रैंडम वेरिएबल है, मुझे पता है कि यार ये x1 के इक्वल होगा या x2 के इक्वल होगा, लेकिन मुझे पता नहीं है कि ये किसके इक्वल होगा। इट डिपेंड्स अपॉन कि x1 x2 जब मैं इंस्टेंशिएट करूंगा, जब मैं उनको एक्सपेरिमेंट करूंगा, मुझे नहीं पता कि x1 क्या वैल्यू लेगा, x2 क्या वैल्यू लेगा। समटाइम्स x1 will be smaller, sometimes x2 will be smaller, so the min of these two guys will take the value either x1 or x2 depending upon whichever is smaller, ठीक है। but whatever value it takes, it will still be a random variable, it will still be a random variable. Realize that this is a function of x1 and x2, this is a function of x1 and x2, ये x1 और x2 का फंक्शन है। ये फंक्शन ऑफ टू रैंडम वेरिएबल्स जो है वो एक रैंडम वेरिएबल ही होना चाहिए और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन मैं फाइंड कर सकता हूं, ठीक है। सो x1 is the smallest, x2 is the second smallest, and so on and so forth. तो सर स्मॉलेस्ट इन वन एक्सपेरिमेंट ना, मतलब हमने एक एक्सपेरिमेंट किया और देख लिया कि कौन सा स्मॉलेस्ट आया, उसको हमने पिक कर लिया स्मॉलेस्ट के लिए, इस तरह? हाँ सही है। तो वो ठीक है। वो ये वाला जो रैंडम वेरिएबल है ना y का वो एक इंस्टेंस आ गया, फिर इसी तरह ठीक है, y का एक और इंस्टेंस आएगा, सो यू हैव दिस y एज अ रैंडम वेरिएबल, सो आई एम इंटरेस्टेड इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y। ठीक है। अभी हमने एक दफा एक्सपेरिमेंट किया और ये जो हमने x1 वगैरह पिक कर लिया, xn था। जी जी, एक दफा, वो तो एग्जांपल देने के लिए आपको कहा ना कि एक दफा एक्सपेरिमेंट रन करेंगे ना तो आपके पास y की एक वैल्यू आ जाएगी, फिर दोबारा रन करेंगे y की एक और वैल्यू आएगी, जी जी। ठीक है। लेकिन हम गारंटी नहीं कर सकते कि वो हमेशा x1 आएगी, हम ये भी गारंटी नहीं कर सकते वो हमेशा x2 आएगी, वो कुछ भी वैल्यू आ सकती है, बट एवर वैल्यू कम्स वो y की कोई डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी, क्या डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी वो नीड टू फाइंड दैट। ठीक है, ठीक है, थैंक यू जी। सो व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द rth guy, व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ rth guy? बड़े आसान है ये, कि यहाँ पे मैं ये लाइन बना देता हूँ, आपके रैंडम वेरिएबल ये कभी भी बराबर नहीं हो सकते, व्हाई? क्योंकि कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, द प्रोबेबिलिटी वन रैंडम वेरिएबल इज एग्जैक्टली इक्वल टू द अदर रैंडम वेरिएबल विल ऑलवेज बी जीरो, कभी भी बराबर नहीं होगी, बिकॉज कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। डिस्क्रीट के केस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। सो rth guy की डिस्ट्रीब्यूशन में मैं इंटरेस्टेड हूँ। सो लेट्स से के वैल्यूज इंक्रीज हियर, वैल्यूज इंक्रीज इन द राइट डायरेक्शन, ठीक है। सो लेट्स से कि ये x और x प्लस dx, ये बहुत छोटी जगह है, let's say your rth guy falls somewhere here, इसका मतलब है कि you will have r minus 1 guys which are smaller than this because this is rth, okay, and then there will be the remaining n minus r guys which will be larger than this, so ये इनके बीच में आएगा कहीं पे, ठीक है। so the probability that your rth guy is between x and x plus delta x
x प्लस डी एक्स, ये इनके बीच में है, ठीक है। क्या प्रोबेबिलिटी है उसकी? उसकी प्रोबेबिलिटी ये है कि r माइनस वन इधर आ जाए और n माइनस r जो है वो इससे बड़े हो जाए, विच मीन्स के द प्रोबेबिलिटी कि आपके पास एफ एक्स जो है ये पावर r माइनस वन हो, यानी r माइनस वन ऐसे हैं जो लेस देन इक्वल टू x है, एंड वन माइनस एफ एक्स ऐसे हैं जो इससे बड़े होने चाहिए, ठीक है। However, this does not complete the answer. Why? Because ये r minus वन कोई से भी हो सकते हैं और ये n minus r भी कोई से भी हो सकते हैं. So I need to multiply it with the permutations here. Multinomial permutations. Okay. So this would be equal to total आपके पास n factorial है और n factorial में से आपके पास r minus वन factorial left पे आ जाएंगे, फिर एक बेचारा बीच में आएगा और n minus r आपके larger होंगे, and then this would be fx power r minus 1 minus fx power n minus r multiplied by the probability that this guy is between x and x plus dx, which is fx dx, which is fx dx. So special cases का consider करते हैं. Special case, ये probability आई है, probability से distribution अगर आपने निकालनी हो, so f x r of x would be equal to this guy n factorial over r minus 1 factorial n minus r factorial into fx power r minus 1 and 1 minus fx power n minus r into fx. ये आपके पास इसकी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी. स्पेशल केस x1 सबसे छोटा वाला, which is min of x1 x2 all the way up to xn, इन सब का मिनिमम है. okay. So we will use r is equal to 1 in this expression. ये वाली जो हमने एक्सप्रेशन ऊपर लिखी थी, इसमें r को 1 पुट कर दें, ठीक है. So f x1 x would be equal to r को 1 पुट करेंगे, आपके पास आ जाएगा ये n फैक्टोरियल है और नीचे n माइनस 1 फैक्टोरियल होगा, तो वो कट के ये आपके पास n आ जाएंगे, एंड देन fx पावर r माइनस 1 ये तो उड़ जाएगा because r is 1, so you will be left with this guy here 1 minus fx power n minus 1 into fx. okay. दूसरा स्पेशल केस भी, और फिर जस्टिफाई भी बड़ा इजीली करेंगे उसको. f x n of x would be equal to, again अब यहां पे r को आप n पुट कर दें, r को अगर n पुट कर दें, so put r is equal to n in this expression. okay. So r को n पुट करें, so again ये आपके पास n आ जाएगा because this would be n minus 1 here and then this would be n minus n. So now you will have fx power n minus 1 multiplied by fx. ये इस एक्सप्रेशन से आपके पास आ गया. इस तक पहुंचने का एक और भी बड़ा आसान था तरीका है, बट ये सिर्फ स्पेशल केसेस तक पहुंचने का आसान तरीका है. वो कैसे आसान तरीका है? रियलाइज कि x of xn जो है, this is the highest guy, this is the max of x1 x2 all the way up to xn. Okay, so I am interested in finding the PDF of xn, जो हमने ऊपर फाइंड आउट कर लिया बाय द वे वो एक्सप्रेशन से, लेकिन देखते हैं उसको किसी तरह डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं. सो let's try to find the CDF. Let's first find the CDF, and you will see that it's very easy to find the CDF. So the probability that xn is less than equal to x,
इसका मतलब हाईएस्ट का है इज लेस देन इक्वल टू x, which means कि this is equal to the probability that max of x1 x2 dot 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 up to xn is less than equal to x. Max जो है वो उससे. Now since all of these are independent, अगर इनका मैक्स जो है वो x से छोटा है तो इसका मतलब है कि सब के सब x से छोटे होंगे, सब के सब x से छोटे होंगे. So this is equal to the probability that x1 is less than equal to x, x2 is less than equal to x, x3 is less than equal to x, and so on, xn is less than equal to x. And then since they are independent, I can separate out the probabilities. X1 is less than equal to x, x2 is less than equal to x, dot dot dot, probability xn is less than equal to x. And what is this? This is simply equal to f of x power n. F of x power n. बहुत simple है. अगर max is less than equal to x, that means each one of them is less than equal to x. That means I can separate out these probabilities. So this is just n CDFs multiplied together. N CDFs multiplied together. Okay. Now you want to find the PDF, differentiate. Differentiate to get fxn of x, जो हमने पहले find out किया हुआ है ये ऊपर. Okay. This would be equal to n fx power n minus 1 into the chain rule, the derivative of this guy, which is fx. This is the same here. This is the same here. ये ऐसे ही है कि हमने कहा था कि ये जनरल हमने फाइंड आउट किया कि इफ यू हैव n guys, उसमें से एक की डिस्ट्रीब्यूशन हम फाइंड आउट करते हैं विच इज समवेयर इन द मिडल. वो हमने उसके लिए जनरल फार्मूला देखा, उसके स्पेशल केसेस हमने देखे. स्पेशल केसेस में हमने xn के लिए हमने कहा कि ये फाइंड आउट करते हैं एंड देन यू फाइंड दिस आउट. ये डायरेक्टली भी कर सकते हैं. सिमिलरली वो मिन वाला जो है उसका भी जो है इजीली हम कर सकते हैं. नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वन एग्जांपल बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. लेट्स से कि आपके पास एक चेन है. ये एक चेन है, उसके अंदर ये लिंक्स पड़े हुए हैं. दिस इज अ चेन इन विच यू हैव लिंक्स. हर लिंक की एक स्ट्रेंथ है, हर लिंक की एक स्ट्रेंथ है और इस चेन की भी एक स्ट्रेंथ है. जो चेन की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी होगी? वो जो वीकेस्ट उसका लिंक होगा, जो वीकेस्ट लिंक होगा वही चेन की स्ट्रेंथ. क्योंकि जब वो वीकेस्ट लिंक टूट जाएगा, सबसे पहले वही टूटेगा, तो चेन ब्रेक हो जाएगी. ओके, सो द स्ट्रेंथ ऑफ द चेन, strength of each link, let's say the strength of each link is uniform between 10 and 20, between 10 and 20. So अगर मैं इसका PDF ड्रॉ करना चाहूँ, so that would look like this, 10 और 20 के बीच में, and the height of this guy is 1/2. This is f s of s, and this is for one link, PDF of the strength of one link. ये हमने बताया, ठीक है, ये आपको बताया. So I am interested in finding the strength of the chain. Let's assume that you have 72 links. Assume करते हैं कि 72 links. ठीक है. अगर आप एक लिंक को देखें, the likelihood that it will break before इसकी स्ट्रेंथ 15 से कम होगी is equal to the likelihood कि उसकी स्ट्रेंथ 15 से ज्यादा होगी. So average strength उसकी 15 आ जाती है. Average strength is 15. Okay. चेन की जो एवरेज स्ट्रेंथ है, इंट्यूटिवली आई वुड एक्सपेक्ट कि वो चूंकि मिन ऑफ ऑल ऑफ दोज है, तो उसकी जो एवरेज स्ट्रेंथ होगी वो 15 से काफी कम होगी. उसकी एवरेज स्ट्रेंथ 15 से काफी कम होगी. ठीक है. सो चेन की स्ट्रेंथ मालूम करते हैं. लेट fs1 is the not fs1, and let करने की भी जरूरत नहीं है. S1 is the strength of chain. क्यों? Sir, why do we need to work this out? Can't it just be 10? Can't it be just be 10? नहीं, देखें strength of the chain जो है वो आपकी 10 क्यों होगी? Because it's a random variable.
मतलब you said कि average 15 है, तो उससे तो कम होगी, that I get, but then नहीं और 10 जो लेकिन है वो lower limit है, तो why can't it be 10? नहीं देखें, हम ये कह रहे हैं कि हर लिंक की एक स्ट्रेंथ है जो एक रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, हर लिंक की एक स्ट्रेंथ है जो एक रैंडम वेरिएबल है। मैं ये चाह रहा हूं कि मुझे चेन की स्ट्रेंथ पता चल जाए, जो चेन की स्ट्रेंथ है इज द मिनिमम ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ ईच ऑफ द लिंक्स। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि किसी लिंक की स्ट्रेंथ मेरे पास 10 भी आ जाएगी, हो सकता है मिनिमम जो है वो आपके पास 12 आए, हो सकता है 12.5 आए, हो सकता है Okay, okay. 12.7 आए, ठीक है। ठीक, So yes, yes. what I'm saying is that S1 is the strength of the chain where S1 is the min of S1 S2 dot dot up to Sn या 72 तक उसको ले जाए। S1 is the min of these guys, ठीक है। So I am interested in the probability of this guy, so वो ऊपर से यूज करेंगे हम fs1 of x would be equal to n times, ये देखें min के लिए हमारी क्या डिस्ट्रीब्यूशन थी, स्पेशल केस ये जो min वाला था इसके लिए this was n into CDF into one density function, so this will turn out to be n into CDF 1 minus CDF, okay, CDF किसका, of one link, CDF of one link, of strength of one link, power 72 minus 1 into fxx, which is 1 over 10. So this would be equal to n into 1 minus एक इसका CDF क्या होगा, इसका जो CDF होगा, CDF if you recall this would simply be equal to x minus 10 over 20 minus 10. A और B के बीच में अगर कोई आपका यूनिफॉर्म होता था तो उसका CDF जो है वो क्या होता था, x minus a over b minus a. This was the CDF. This was the CDF. So this would be power 71. Okay. So इसको थोड़ा simplify करें. So this would turn out to be, by the way, n is 72 here. n 72 है तो हम यहाँ 72 लिख देते हैं. So 72 divided by 10, this would be 7.2, and 20 minus x over 10 power 71. And remember, it has to be, x has to be between 10 and 20. इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं वो ले सकता. इसकी स्ट्रेंथ जो है इसके अलावा कुछ नहीं हो सकती. हर चेन की जो स्ट्रेंथ है वो 10 और 20 के बीच में है, तो उनके सम की जो स्ट्रेंथ होगी वो भी आपके पास जो है वो इससे ज्यादा, इससे कम या ज्यादा नहीं हो सकती. सो इसको प्लॉट करते हैं, इसको प्लॉट करते हैं. सो प्लॉट अगर इसको करें, सो 10 के लिए और 20 के लिए, इसको 10 के लिए अगर प्लॉट करें तो we get 20 minus 10 over 10, which is 1 power 7. So this will turn out to be 7.2. ये 7.2 और ये आपके पास स्ट्रेंथ है 7.2, ठीक है. 20 पे कितनी है, 20 पे इसकी स्ट्रेंथ जो है वो कितनी हो जाती है, 20 तक पे जाके इसकी स्ट्रेंथ 0 हो जाती है. सो ये ऐसे गिरेगा, ऐसे गिरेगा. इनफैक्ट मे बी इवन फास्टर देन दिस, इवन फास्टर देन दिस. किस तरह इसकी स्ट्रेंथ. तो ये प्लॉट करें अगर इसको तो ये आपके पास आ जाए. नाउ यू माइट नोटिस कि इसकी स्ट्रेंथ जो है आपके पास कभी भी 15 नहीं है. बल्क ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज क्लोजर टू 10. ओके, सो द स्ट्रेंथ ऑफ द चेन इज skewed to the minimum value, is skewed down. इसकी expected value अगर आप निकालें तो you will find out कि it would be much smaller than 50, much smaller than 50. So now I'm going to do an extension of a topic जो हमने single random variable के केस में किया था, and this is called the bivariate change of variables. Bivariate change of variables. इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि रिकॉल करें कि आपके पास y is equal to fx
ये आपके पास एक सिंगल रैंडम वेरिएबल का केस था। इफ पीडीएफ ऑफ एक्स वाज गिवन, ठीक है, we were able to find the PDF of y। कैसे? उसके मुख्तलिफ मेथड हमने देखे थे कि या पहले CDF फाइंड कर लें y का और फिर उसके बाद डिफरेंशिएट कर लें तो PDF आ जाएगा, या हमने एक उसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर भी देख लिया था कि fy of y चैप्टर 5 के एंड पे था ये, y is equal to summation I is equal to 1 to capital K fx of xi into dx over dy for each x is equal to xi। xi क्या चीज है? Where x1 x2 dot 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 up to xk are the solutions of y is equal to gx। ये उसके सॉल्यूशंस होते थे। सो एग्जांपल उसकी क्या थी? एग्जांपल उसकी ये थी, ये हमने वहां चैप्टर 5 में भी किया था कि y is equal to x square। This gives you x is equal to plus square root of y and minus square root of y। तो इसके ये दो आंसर्स निकलते हैं, तो ये दिस वुड बी द समेशन ऑफ डेंसिटी फंक्शन। ये दो पॉइंट्स के ऊपर उसको हमें ऐड करना पड़ेगा। ये हमने एग्जांपल की भी थी लास्ट टाइम। नाउ आई एम गोइंग टू जनरलाइज दिस टू मल्टीपल रैंडम वेरिएबल्स। Generalize to multiple random variables। आपको दो रैंडम वेरिएबल्स दिए, x1 x2 pdfs given, y1 y2 are functions of x1 x2, ठीक है, need the joint PDF of y1 y2 joint PDF। so x1 x2 का joint PDF दिया होगा आपको, और y1 y2 का आपको joint PDF निकालना, ठीक है। so let's say you are given y1 is equal to g1, some function g1 of x1 x2, and y2 is equal to g2, some other function of x1 x2। वो भी x1 x2 का फंक्शन है, ये भी x1 x2 का फंक्शन है। ये सिंपल जनरलाइजेशन है इस एक्सप्रेशन की जिसमें y was a function of x। Here you have two y's, each of those is a function of x1 and x2। So I can write it as if we can satisfy the following two conditions, ठीक है, ये हमारे पास two conditions है, तो फिर हम ये ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। अगर ये दो कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई होती हैं तो हम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। नंबर 1 कि y1 is equal to g1 x1 x2, एक ये एक्सप्रेशन है, दूसरा y2 is equal to g2 of x1 x2। these equations are invertible, okay, can be solved for x1 and x2, can be solved for x1 and x2 such that x1 is equal to h1 of y1 y2 and x2 is equal to h2 of y1 y2। so बजाय इसके कि y को हम x की टर्म्स में रिप्रेजेंट करने के, मैंने दोनों एक्सिस को जो है वो y की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, the second condition is कि the following determinant is non-zero। ये डिटर्मिनेंट में ऐसे डिफाइन करता हूं, is equal to partial g1 over partial x1, partial g1 over partial x2, partial g2 over partial x1, partial g2 over partial x2। ये डिटर्मिनेंट आपके पास एग्जिस्ट करता है, नॉन जीरो है for all x1 and x2, ठीक है। अगर ये एग्जिस्ट करता है, then we can find the joint PDF of y1 and y2 as follows। y1 y2 is equal to, अभी आपको ये सिंगल वेरिएबल से भी रिलेट करवाएंगे। सो देखें, सिंगल वेरिएबल के केस में क्या था कि वो जितने भी आपके पास रूट्स आते थे वो मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ x, यहाँ पे आप देखें ये डेरिवेटिव के बजाय जो है यहाँ पर आप
ये सिंपली ये आप ये जे फंक्शन ले रहे हैं, इस जे फंक्शन को कहते हैं जेकोबियन. This is called the Jacobian of transformation. It's called the Jacobian of transformation. Okay, so this would be equal to f x1 x2 into j x1 x2 inverse, magnitude inverse. ठीक है. So simply आपने क्या किया कि you were in the x1 x2 axis, आपने उसको ट्रांसफॉर्म करना है y1 y2 एक्सिस के ऊपर, y1 y2 एक्सिस के ऊपर. सो एक आपके पास यहाँ पे पॉइंट है विच इज द प्रोबेबिलिटी, ये x1 x2 की शक्ल में जो आपको मिलती है f x1 x2 x1 x2 dx1 dx2. ये एक छोटा सा पॉइंट है जिसकी आपने प्रोबेबिलिटी जो है वो इन टर्म्स ऑफ f(x1 x2) ये हमने लिख दी है. ठीक है, इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं तो ये ट्रांसफॉर्म होके इस एक्सिस में कहीं आ जाएगा, इस एक्सिस में लेट्स से कि ये इस तरह का पॉइंट बन जाता है. और ये ट्रांसफॉर्म होके किसी और जगह पे क्यों आता है? बिकॉज ऑफ दीज फंक्शंस g1 and g2. g1 and g2 they transform from x plane to y plane, from x1 x2 plane to y1 y2 plane. so g1 और g2 जो है ये ट्रांसफॉर्म करते हैं आपको यहाँ पे. so this would be f(y1 y2) f(y1 y2) y1 y2 dy1 dy2. एग्जाम्पल देंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा ये. सो बाज़ औक़ात ऐसा होगा कि यू विल बी ओनली इंटरेस्टेड इन वन रैंडम वेरिएबल, बट यू विल हैव टू यूज अनदर रैंडम वेरिएबल जिससे आपका सवाल आसान हो जाएगा. सो समटाइम्स interest in a single random variable y1 as some function of x1 x2, इंटरेस्ट सिर्फ उसके अंदर होता है, but easier to use y2 as well. इसको हम कहते हैं auxiliary random variable को यूज करते हैं. So I will give you an example which will clarify this. So let's say you have y1 is equal to x1 plus x2 and y2 is equal to x1 minus x2. ये simple transformation. ठीक है, and let's say कि f x1 x2 is given. ये आपको दिया हुआ है, ये आपको given है. ठीक है, and our interest in finding the joint density function of y1 y2. अगर joint पता चल जाए तो मैं marginal भी find कर सकता हूँ. By the way, find for f y1 y2. सबसे पहले तो ये कंसीडर करते हैं, ये इक्वेशन कि y1 is equal to x1 plus x2 and y2 is equal to x1 minus x2. Can I solve these two to find x1 x2 in terms of y1 y2? The answer is of course yes. ऐसे इन दोनों को ऐड कर दें तो 2x1 would be equal to y1 plus y2. So x1 would be equal to y1 plus y2 divided by 2. Okay. So can I solve these in terms of x1 and x2? Okay. So x1 would turn out to be equal to y1 plus y2 and x2 will turn out to be y1 minus y2 by 2. ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना है x1 और x2 की शक्ल. दूसरी चीज, पहले तो हमने ये टेस्ट कर लिया. दूसरा टेस्ट है कि जैकोबियन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, नॉन जीरो है या नहीं है. सो जैकोबियन ऑफ x1 x2 इज पार्शियल x1 partial g1 over partial x1, so this is your g1, partial g1 over partial x1, which is 1, and partial g1 over partial x2 is also 1. Partial g2 over partial x1 is 1, partial g2 over partial x2 is, yeah. So this will turn out to be minus 1 into 1 is minus 1 minus 1, which is equal to minus 2. Okay. Then I will use this expression. Okay. Joint density function of y1 and y2 would be equal to the joint density function of x1 x2 multiplied by the inverse of Jacobian. So f y1 y2 would be equal to
the joint density function of x1 and x2 जो भी थी वो हमें दी हुई है वो x1 x2 x1 x2 okay into the inverse of Jacobian magnitude. So ये -2 है तो ये magnitude लेंगे तो +2 हो जाएगा and 2 inverse which is 1/2. This is 1/2. Okay. Now, is this it? Well, this is not it. Why this is not it? Because मेरे पास तो ये मुझे joint density function y1 y2 का चाहिए in terms of y1 and y2. ये तो आंसर मेरे पास आ रहा है x1 x2 की शक्ल में. So I am not interested in that. I am interested in converting x1 and x2 into y1 and y2, which I can certainly do that. Which I can certainly do that by using this expression. X1 is y1 plus y2 over 2 and y1 minus y2 over 2. Okay. Divided by 2. And then we are done. And then we are done. So one more quick example. One more quick example. So example is x1 is normal 0, 1. x2 is also normal 0, 1. Okay. And let's say they are independent. And let's say they are independent. Okay. So I define two new random variables, y1 to be equal to x1 cos theta minus x2 sin theta. Theta is a constant. Theta is a constant. Similarly, y2 is x1 sin theta plus x2 cos theta. What this represents is a rotation of axis by theta. Rotation of axis by theta. Theta is constant. Theta is constant. So, जब आप rotation करते हैं, जैसे हमने यहाँ ऊपर बताया था कि Jacobian जो है is this transforming from here to here. तो अगर आप एक्सिस को सिर्फ रोटेट कर दें, अगर आप सिर्फ एक्सिस को रोटेट कर दें, तो जेकोबियन जो है वो आपका 1 ही आना चाहिए. जेकोबियन आपका 1 आना चाहिए. व्हाई? बिकॉज एक्सिस की रोटेशन से इस एरिया का और इस एरिया का आपस में रिलेशनशिप जो है वो सेम रहता है. ओके, सो is the area ratio, Jacobian is the area ratio from here to here, from here to here. Okay, so let's find that out. Let's find that out. ठीक है, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि सबसे पहले can I represent x1 and x2 in terms of y1 and y2? Can I represent that? So इसको अगर solve करें आप x1 और x2 की शक्ल में, ठीक है. So one way of doing that is कि ये थीटा से रोटेशन आपने की है तो माइनस थीटा से रोटेशन वापस कर देते हैं. So I know that y1 is equal to x1 cos theta minus x2 sin theta and y2 is equal to x1 sin theta plus x2 cos theta. So this is rotation by theta. Either you solve by using some other method for x1 and x2, which you can certainly do that, or just realize that this is rotation by theta, so you just need to rotate by minus theta to get x1 and x2 is equal to y1 cos of minus theta minus y2 sine of minus theta is equal to y1 sine of minus theta plus y2 cos of minus theta. So which would be equal to y1 cos of minus theta is cos theta and sine of minus theta is minus sine theta. Sine theta. Okay. Similarly, this guy would be equal to minus y1 sine theta plus y2 cos theta. Okay. Jacobian find out करते हैं. Jacobian x1 x2 would be equal to Jacobian would be equal to Jacobian क्या होगा? Partial g1 by partial x1 partial g2 by partial x2. So ये find out करते हैं. Partial g1 by partial x1 which is cos theta and then minus sine theta and then sine theta and then cos theta. And this turns out to be cos square theta plus sine square theta which is equal to 1. जो हमने पहले ही predict किया था कि ये सिर्फ rotation है, तो ratio of area ratios जो हैं वो पहले वाली एक्सिस में और दूसरे वाली एक्सिस के अंदर वो चेंज नहीं होने चाहिए क्योंकि रोटेशन से तो और कुछ भी नहीं होता. So then the joint PDF of y1 y2. By the way, if this is rotation, तो rotation से जो है
ज्वाइंट पीडीएफ के ऊपर भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बट वी नीड टू वेरीफाई दैट. फाइंड द ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ y1 and y2. f y1 y2 y1 y2 would be equal to f x1 x2 x1 x2 into j x1 x2 इसका इनवर्स. ठीक है. सो जैकोबियन तो 1 है, ये तो वैसे ही उड़ जाएगा. सो this turns out to be equal to this, लेकिन that doesn't mean that the PDFs are equal, क्योंकि ये x1 की टर्म्स में है, ये x1 x2 की टर्म में, ये मुझे y1 y2 की टर्म्स में चाहिए. ठीक है. सो f y1 y2 y1 y2 is equal to f x1 x2 x1 x2, which can be written as f x1 x1 f x2 x2. Why? Because of independence. Yeah. But what is f x1 x1? f x1 x1 f x1 x1 is f x1 x1 is 1 over square root 2 pi. This is the standard normal ka PDF, x square over 2 x1 square over 2, and f x2 x2 is equal to 1 over square root 2 pi e to the minus x2 square over 2. Okay. Then f of y1 y2 would be equal to, ये दोनों का product आप ले लें, इन दोनों का product लेंगे, so this will turn out to be 1 over square root 2 pi e to the minus x1 square over 2 into 1 over square root 2 pi e to the minus x2 square over 2, which is equal to 1 over 2 pi e to the minus x1 square plus x2 square over 2. Okay. But x1 square plus x2 square is equal to x1 square plus x2 square. यहाँ से देखें, x1 square plus x2 square. So this is x1 and this is x2. इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे, x1 square plus x2 square, it will resolve to y1 square plus y2 square. Small x1 should be small x1. Solve करें x1 और x2 की values डाल के, use values of x1 and x2 from above. So which turns out, okay, f y1 y2 y1 y2 is equal to 1 over 2 pi e to the minus y1 square plus y2 square divided by 2, which of course can be written as 1 over square root 2 pi e to the minus y1 square over 2 into 1 over 2 pi e to the minus y2 square over 2, which is fy y1 fy2 y2. दोनों y's का ये product है. So as we expected, कि simple rotation of the axis जो है वो उसका कोई impact नहीं आया, ये independent है. अगर ये independent ना होते तो फिर क्या होता? Well, in that case we would have expected slightly different result. ये हमारे पास शायद ये independent ना होते तो x और y की terms को हम अलग भी, x की 1 और x2 की terms को हम अलग भी ना कर सकते, उसको अलग भी ना कर सकते, और ये वाली चीज भी जो है, this might have let's see, नहीं, this would probably be the same, this would be the same, this would remain the same. Yeah, we will need to solve. Okay, what if x1 and x2 are not independent? We will need to see. We will definitely know. Okay, ये product of two density functions नहीं आएगा इस तरह से, but we will need to see क्या आएगा. There is another example which is
given in the notes. वो हमने homework में question भी दिया हुआ है, और I have solved this in the class notes as well. So please take a look at that. There are a few questions in the homework which are about order statistics, a few questions about the transformation of multiple random variables, and then a couple of questions about the sums of random variables. So the homework as usual is due on Sunday. We will upload the solutions. We have a quiz on Monday as well, second last quiz, and then we will have another one in the following week from chapter 7. Next class we will start with chapter 7, which is the properties of expectations. There will be no new material introduced except for conditional expectation. एक सिर्फ टॉपिक होगा जो हम नया इंट्रोड्यूस करेंगे, बट रेस्ट ऑफ इट वुड बी प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेशन दैट वी ऑलरेडी नो. पहले से हमें पता है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, जॉइंट की कैसे कैलकुलेट करेंगे, कंडीशनल की कैसे कैलकुलेट करेंगे. So most of the chapter would be learning the tricks about the finding the expectation of random variables, multiple random variables, and that would be the last chapter that we will probably get to cover in the semester. I'm not sure if we will be able to finish that entire chapter or not, but we will try to cover it as much as possible. So if there are any questions about the material covered today, तो वो पूछ लें, सवाल पूछ लें. Otherwise we will close the session. कोई सवाल है? No questions? All right. Okay. Thank you very much. So I'm going to stop the sharing and then closing the session. Thank you. I'll see you on Tuesday.